Hello guys and welcome back to Future Academy. So now onwards we have started with the metabolism. First we are going to deal with the carbohydrate, later protein, nucleic acid and lipids. Okay. So with the lipid metabolism and everything, so metabolism is both we are going to discuss. So पहले हम देख रहे हैं कि glycolysis, for example, in the case of carbohydrate, glycolysis पढ़ेंगे कि like how glucose is being metabolized, ठीक है? और आगे जाके हम प्रोटीन का पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड का लिपिड होगा, कैसे सिंथेसाइज करते हैं और कैसे इसको use करते हैं. Okay? So metabolism is both catabolism and anabolism will be dealing over here. So let's talk about glycolysis first. It's very basic and we are studying this from our very starting of this bio career, like BSc, MSc, we are studying glycolysis. Okay, so glucose is a key metabolite in human metabolism. क्यों? Because हर एक चीज जो भी हम खाते हैं, everything at the end is getting converted into the glucose. Okay, so glycolysis is a universal catabolic pathway in cytoplasm of all the organisms, irrespective of whether they live aerobically or anaerobically. Hey Smriti, audible? Yes, ma'am. So already we have completed one small lecture, so that you can watch it from the recorded lecture. So just now I have just started about the glucose metabolism. Just one sentence I have said. So nothing you have missed. So let's do this topic. So I have started with the carbohydrate metabolism. Okay. Okay. So the Yes, first step is always the degradation of glucose is the glycolysis, which brings down glucose to pyruvate. ठीक है? तो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, आपका बैक्टीरिया हो गया या ह्यूमंस हो गए, कोई भी एनिमल मैमल्स ले लो, पहला काम क्या है आपका? ग्लूकोज से सीधा ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करना. ठीक है? Now why we always talk about glucose? Because glucose is the smallest molecule. It is the smallest molecule which can be enter the any cell easily. ठीक है? तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है ग्लूकोज को एंटर कराने के लिए we have got the glue transporters 1 से लेके 12 different types are there. So brain it is different, for muscle it is different, right? So we have got the glucose transporters for this. Okay? अभी आपको ये भी मालूम है whenever someone faints, हम सबसे पहले उसको डायरेक्टली ग्लूकोज देते हैं या सलाइन देते हैं. Now glucose अगर दे रहे हो तो उसी का सलाइन देना भी जरूरी, because you know the glucose transporters along with the glucose will be plus so that it will be absorbed by the our intestine, and then only it reaches to your blood, and from the blood it goes to your different tissues and cells where glucose is required. Okay. So glycolysis is an energy conversion pathway which produces ATP. So glycolysis means sweet dissolution, यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक करके एट द एंड हमें सिर्फ एटीपी चाहिए. A brain can use only glucose under the non-starvation condition, and RBCs can use it, so it is an important fuel. An alternative pathway to glycolysis for complete glucose breakdown is the hexose monophosphate shunt, HMP shunt. ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है. तो सबसे पहले तो हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, HMP के बारे में, hexose monophosphate shunt. Okay, so HMP pathway produces NADPH rather than ATP, or NADPH is also equivalent of around, any idea कितना है? So it is equivalent of around 2.5, किसी 3 दिया हुआ है. Yes, ATP. Good. And हमारा FADH2 जो है, it is 1.5 या 2 of ATP molecule. So at the end क्या हमें ATP ही चाहिए and वो हमें मिल रहा है. ठीक है? So both ATP and NADPH are needed in every cell, and accordingly both glycolysis and HMP shunt are ubiquitous in nature. Ubiquitous nature means it is present in all the living species. Okay. Then alternative structures of D-glucose, इसमें कुछ ज़्यादा बताने का नहीं है, because we know that the sugars exist in two forms, alpha and beta. D-glucose भी है हमारे पास, ठीक है? And one more thing, in the case of sugars, it is always the D form, ठीक है? Whereas in the case of the amino acids, it is always the L form. So don't get confused. Now, so this alpha and beta is because of the anomers which are present at the first carbon. Okay.
So it is because of the first carbon. यहाँ पे नीचे अगर OH है तो आपका अल्फा हो गया, अगर ऊपर है तो बीटा हो गया. So in the presence of water, the alpha and beta are interchangeable reversibly by an open chain aldehyde intermediate form. तो जैसे हम ग्लूकोज को पानी में ऐड करते हैं, there are chances that alpha से वो बीटा हो, बीटा से वो अल्फा हो. So that's why the equilibrium sign has been shown. और इसके बीच में जो aldehyde form हो रहा है, this one. So you can see that the chain has got open and double bond O is formed. ठीक है? Aldehyde means you have got the CHO group. Now, starch and glycogen consist of and yields alpha D glucose, and it is the first substrate in the glycolysis. Okay, so glycogen जो रहता है ये हो गया आपका storage house, a storage form of your glucose in the mammals. Whereas starch is the storage form in the case of the plants, है ना? ये plants हो गया, ये आपका mammals में हो गया है. Okay, so both we are going to study in detail with the structure. So what is given you over here now? So you see that glucose undergoes glycolysis finally to get the pyruvate. Now pyruvate which will enter, ठीक है, फिर हमारा Krebs cycle चलेगा, फिर later it is going to enter the respiratory chain, या फिर we also say that electron transport chain में जाएगा, ठीक है. So finally what is happening? CO2 is being released, oxygen is being used, finally water हमें मिलता है और as a byproduct we get ATP. And this is what we are interested in. Okay? और ये कहाँ पे हो रहा है आपका सारा का सारा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है. In the case of the triacylglycerol, ये कहाँ से आ रहा है आपका फैट से आ रहा है. So from the fat directly what you get is acetyl CoA. Acetyl CoA. यहाँ पे आपको pyruvate नहीं मिलेगा. What we say is that pyruvate is the only form by which it can enter the mitochondria. But no, from the lipids, okay, it is from the acetyl CoA condition that will enter. And we have also discussed that like carbohydrate or the fatty acids which will give more energy. So already we have discussed it is the fatty acids because they will give more number of acetyl CoA. Right? Okay, so glycolysis which will begin, it begins with the phosphorylation of glucose to glucose 6-phosphate by hexokinase. So यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा descriptive है, उसके बाद we'll see the pathway. Okay. So okay, so first thing is first that is your glucose becomes your glucose 6-phosphate by hexokinase. Okay. Now in subsequent steps of the pathway, one glucose 6-phosphate molecules are oxidized to finally 2 pyruvate molecules with the generation of 2 molecules of pyruvate, 2 molecules of NADH, and 2 molecules of ATP. Okay. Pyruvate is decarboxylated to acetyl CoA by pyruvate dehydrogenase in mitochondria, and जो acetyl CoA है ये है जो आपका citric acid cycle में जाएगा, ठीक है. Okay. One more thing. Now guys, if suppose मैं ये बोलूँ आपको कि glucose 6-phosphate आपका single step है, this is your rate limiting step. It is not in equilibrium, यानी कि ये reversible नहीं है. Can you tell me the evolutionary significant answer for this? Why it is not reversible? Glucose to glucose 6-phosphate एक बार बन गया तो बन गया, इसके बाद वो वापस ग्लूकोज नहीं बनेगा unless until you start glyconeogenesis, ठीक है. But इसके पीछे evolutionary answer है. What do you think guys? क्या हो सकता है इसका आंसर? Yes. Any idea? स्मृति कुछ लगता है क्या रीजन होगा? Ma'am, is it with respect to the enzyme activity? नहीं. I mean, since it is evolutionary evolved, that's why the enzymes are doing like this. But इसका क्या रीजन हो सकता है? See, बहुत ही simple है, and it makes sense also कि हाँ, like if you see how one particular cell is behaving, you will see that they are more intelligent than the entire human. ठीक है, हमारे एक सेल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है. See what happens is that अभी आपके पास suppose this is your one cell, ठीक है. ग्लूकोज आया, with the help of the glucose transporter वो अंदर चला गया, ठीक है. Okay. Since here the molecules of glucose are more, so what are the chances that glucose transporter आपके यहाँ पे forward करते रहेंगे, right? क्योंकि सेल को जरूरत है. अभी सेल को जरूरत है, that's why it is going to convert your glucose into glucose 6-phosphate.
ठीक है। इफ दिस इमेजिन यहाँ पे जो नेक्स्ट एंजाइम है, ठीक है, इफ इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में रुक जाएगा. देयर विल बी क्लस्टरिंग ऑफ द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. बट सपोज आई हैड दिस रिवर्सिबल आल्सो, अगर सपोज ये पीछे भी जा सकता तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका ग्लूकोज बन जाता. ठीक है. So what will happen to the concentration of glucose inside the cell? It will increase, है ना? Yes, ma'am. अब किसी भी सेल के अंदर कोई भी सॉल्यूट का concentration increase होगा, so what will happen? And plus we have got a semi-permeable membrane. Osmosis होगा, है ना? Yes, ma'am. So what will happen? अभी अगर ग्लूकोज concentration increase हो रहा है, आपके पास membrane है, osmosis हो रहा है, so what will happen? So the water content will go inside. Eventually it will burst out, है ना? Yes, ma'am. So Yes, we ma'am. don't want this. हमें ये ऐसा नहीं चाहिए. इसीलिए whenever any cell says that कि हाँ I need glucose, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, ग्लूकोज को उसको अंदर ले लिया और उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया. अभी अगर आप आगे देखोगे जाके, लाइक व्हेन यू स्टडी मोर इन डिटेल, ठीक है, जो हम ग्लाइकोलाइसिस इस लेवल में पढ़ रहे हैं, दैट इज ओनली मेंट टू क्लियर द एग्जाम. व्हेन यू गो फॉर द रिसर्च लेवल, इट बिकम्स मोर हाई, व्हाट टू से, इन डिटेल एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड. So glucose, the molarity, osmolarity of glucose and glucose 6 phosphate is different. It has got less, it has got high. ठीक है. तो इसलिए सेल क्या करता है, अपने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेता है. लेट इट बी ओके, सेकंड थर्ड एंजाइम इसको कन्वर्ट करे या ना करे, दैट इज डिफरेंट इशू. ठीक है. पहला काम क्या था, भूख लगी है, खाना दो, खाना दे दिया. अब बाकी आपके ऊपर है कि आपने उसको जल्दी खाया, लेट खाया. Okay. Yeah. So I hope this concept is clear. Why glucose is immediately converted to glucose 6 phosphate. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now NADH and FADH2 formed during the oxidation of glucose are oxidized in the ATC to form at the end ATP. So if glucose is available in excess, it will be converted into glycogen. यही होता है first form of your storage. ठीक है. Now, acetyl-CoA formed during oxidation of pyruvate is used for fatty acid synthesis. अभी क्या है, ग्लाइकोजन हो गया और दूसरा फॉर्म क्या हो गया आपके पास, acetyl-CoA. ये हमने उसको बर्न तो कर लिया, ग्लूकोज को मैंने बर्न तो कर लिया, बट आइदर आई कैन हैव इट एज ए ग्लाइकोजन. अब ग्लाइकोजन की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है. ठीक है. आफ्टर दैट सी ग्लाइकोजन कैसे रहता है, इमीडिएटली आपको भूख लगी है और आपको खाना नहीं मिला, सपोज दोपहर में आपने खाया, रात में नहीं खाया, but you are hungry, your body needs glucose, so immediately the glucose will be taken from the glycogen. ठीक है. अब अगले दिन you are eating, so glycogen जितना स्टोर करना था कर लिया, उससे ज्यादा वो नहीं करेगा. Now what will happen, entire glucose will be converted to acetyl-CoA और ये जो है आपका फैट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. And then starts your fat deposition in the body. Okay. So acetyl-CoA formed during oxidation of pyruvate is used for fatty acid synthesis, and fatty acids glycerol, they will form triacylglycerol. And this fatty acid synthesis occurs in the cytosol of cells in the liver and adipose tissue. In the absence of oxygen, pyruvate can be fermented to lactate or ethanol. ये हम सब करेंगे. Guys, अभी इतना clear है glycogen and about the adipose tissue, right? So you Yes, know that अगर suppose any person wants to lose weight, ठीक है, suppose they want to lose weight, so आपने देखा होगा सबसे पहले upper body fat जाता है from the face and from the arms, neck area. तो सबसे पहले body जो lose करता है weight वहां से करता है. I'm not talking about toning up या muscle building, जो proper weight lose करना चाहते हैं. ठीक है. तो from the face first it will be, फिर neck region रहता है, फिर arms region रहता है. Then the main body fat is present for a female. Okay, for a female I'm talking. It is present in the belly and then it is present in the thigh area. फिर उसके बाद थाई में टारगेट होता है, उसके बाद लास्ट में बेली. तो बेली फैट इज लाइक वेरी स्टबर्न फैट, वो बॉडी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं unless until you work out for continuously 1 or 2 years. ठीक है. तो वो जो आपका एडिपोज टिश्यू जो रहता है वो आपका बहुत ही स्टबर्न हो जाता है, बिकॉज it has kept the energy for your
ऐसे क्या कहते हैं इमरजेंसी केस के लिए, जहाँ पे suppose you're not getting food for another 1 week or 2 weeks, then only the parts from that belly area, thigh area will be utilized so that you can survive those days. So that's why we are able to survive without food for those many days. अगर पानी मिलता रहे, it is sufficient. You guys can go without food for 1 month. बस पानी मिलना चाहिए. There are many people which have gone, let's say, fasting for 1 month and just having only water. Of course, they start building muscles also later, because then from the protein they are actually taking the energy. Anyways, so glycolysis occurs in 3 stages, or you can say that 2 phases are also there: preparatory and finally the harvesting stage. So stage 1 is the investment stage, जहाँ पे आपने 2 molecules of ATP use किया है, ठीक है, and the glucose is converted into unstable form which can be fused into 3 carbon units. So 6 carbon units से आपको 2 molecules of 3 carbon units मिलते हैं. So first stage, then it is preparatory stage in which fructose 6-phosphate is cleaved into 2-3 carbon units of glyceraldehyde 3-phosphate and then harvesting. यानी कि क्या, पहले मैंने 2 molecules of ATP use किया, अब मैं उसको हार्वेस्ट कर रही हूँ. So harvesting 4 molecules of ATP and 2 molecules of NADH. So इसलिए हमें नेट गेन कितना हुआ था ATP का 2. 2 लगाए 4 मिला, तो नेट गेन कितना हुआ मेरा 2 ATP molecules. ठीक है. And finally, this glyceraldehyde 3-phosphate is oxidized to 5. Now, guys, हम ये चार्ट करेंगे और इस तरह से करेंगे कि that we are going to learn the glycolysis today itself. ठीक है. और उसको भूलना भी नहीं है till you write your exams. Okay. So first is glucose to glucose 6-phosphate. Guys, can you see it is a single direction. ठीक है. ये आपका irreversible है. ओके, सो एटीपी यूज हुआ है क्यों? 6-phosphate. ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया आपका? एटीपी से आया. तो ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-phosphate इज बाय द हेक्सोकाइनेज एंजाइम. ओके, सेकंड हो गया आपका फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, पीएफके भी कहीं बोलते हैं, यानी हाँ ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. नाउ fructose 6-phosphate to fructose 1,6-bisphosphate. Again, you have used the ATP molecules. So first ATP, second ATP gone. Now, from the fructose 1,6-bisphosphate, you are going to get 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate या dihydroxyacetone phosphate. ये जो रहते हैं ये आपस में interconvertible है. ठीक है. यहाँ पे aldolase है और यहाँ पे जो है यानी कि dihydroxyacetone phosphate जो है ये वापस आपका glyceraldehyde 3-phosphate भी बन सकता है. Triose phosphate isomerase. So guys, is it okay? आपको याद हुआ? Yes, ma'am. हाँ, पक्का? Yes, So we have got yes, over here all the steps. Guys, clear है ना? पक्का? Because I'm gonna ask you now. ठीक है? चलो मैं भी yes, पूछती हूँ. Okay. हाँ. So what was the first step? Glucose के बाद what is coming next? 6-phosphate. Yes. After glucose 6-phosphate. Glucose. And fructose 6-phosphate. Yes. फिर आएगा आपका fructose 6-phosphate. Then Fructose 1,6 bisphosphate. Fructose 1,6,5. हाँ, bisphosphate. Okay. Then yes. क्या आएगा? Ma'am, 2 molecules of 3-glyceraldehyde. हाँ, glyceraldehyde 3-phosphate. 3 मत बोलो क्योंकि वहाँ पे फिर वो आइसोमर बन जाते हैं ना, अलग हो जाते हैं. Okay. Now what about the enzyme over here? हाँ, और हो गया आपका dihydroxyacetone phosphate. Very good. The first enzyme is Hexokinase. very good. Second, Isokinase. isomerase. कौन सा वाला? Why isomerase? क्योंकि ग्लूकोज से फ्रक्टोज किया ना हमने, इसलिए आइसोमेरेज है यहाँ पे. फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज. नेक्स्ट, फ्रक्टोज 6-phosphate है. पीएफ. Fructose. यस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. ठीक है, बिकॉज हमने एक और यहाँ पे ऐड किया, सॉरी ये वाला ऐड किया है. ठीक है, अगेन अ फॉस्फेट ग्रुप हैज बीन एडेड, सो इट इज द काइनेज. सो कौन सा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. देन यहाँ पे aldolase. देन नेक्स्ट डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन को कन्वर्ट करने के लिए वी हैव गॉट दी ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज. Triose. गुड.
सिंपल है, बट जैसे जैसे अभी नाउ एक चीज जो आपको करना है, ओके, ऐसे नहीं बोलना कि मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने पढ़ाया नहीं। ईच एंजाइम हैज गॉट इट्स ओन कोफैक्टर टू एक्ट, सो दैट टेबल यू नीड टू मूव। आप एक टेबल बना लो जिसमें आपने सारे एंजाइम्स के नाम लिखे हैं एंड जस्ट मेक अ लिस्ट कि कौन कौन से कोफैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। Okay, so let's see the second phase, that is payoff phase. Now why it is called payoff phase? Because starting में आपने इसको prepare किया, आपने ATP use किया है, अभी हम उसको वापस ले रहे हैं, हम हमारा जो फायदा है वो भी हम वापस ले रहे हैं, ठीक है। Okay. So we have got the spelling mistake है, थोड़ा सा glyceraldehyde है, ठीक है, glyco नहीं है, glyceraldehyde 3-phosphate. So finally we had over here triose phosphate isomerase, जिससे मुझे डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन जो है 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate हो गया। Now what had happened? I am going to use dehydrogenase. जहां जहां आपका dehydrogenase होता है वहां हमेशा NADH यूज होता है, ठीक है, गांठ बांधकर। So यहाँ पे होगा glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, हमने 2 molecules है तो हमने 2 molecules of NADH यूज किया है, ठीक है। So that is being converted into 1,3-bis phosphoglycerate. Okay, then again ATP आपने यहाँ बनाया है, so what you got now 3-phosphoglycerate. then यहाँ पे क्या आएगा आपका म्यूटेज, 3 से 2 कार्बन में गया है, so 2-phosphoglycerate, phosphoenol pyruvate and then finally pyruvate. So proper 10 steps glycolysis है ये, ठीक है। So first enzyme was in the payoff is glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, then kinase. Now why kinase? Because now we are taking back our ATP, है ना, तो यहाँ पे kinase आ जाएगा। Then phosphoglycerate mutase, 3 से आपने 2 कार्बन किया है, इसे mutase. Then phosphoenol pyruvate बनाने के लिए enolase and finally pyruvate के लिए pyruvate kinase, ठीक है। So guys, you think it is possible for you to remember all these 10 steps along with the enzymes? Yes, ma'am. हाँ, तो ये रहेगा आज का आपका काम, and I'll be stopping her now. Okay, ma'am.